I started recording. So, hello, my friend. Namaskar. So, in this class, we are going to see the checksum numerical and the question which is asked in the GATE examination or in other examinations also. So, here, whatever the exam you are going to give related to IT, so यहाँ पे आपका checksum important होता है. So, as we are going to see the numerical, how we can solve that. As in our last class, we have covered this thing, and now we are going to see with this. So, यहाँ पे we are having error detection and our error corrections. So here the examiner asks question from these two, your CRC and your checksum. So from here the examiner asks the most of the questions. So here we are going to see first our checksum. So क्या है checksum और checksum से क्या सकता है? So let's see first the numerical question, how the examiner is going to ask the question. Okay, so let's suppose this is the question which is visible to you. Okay, so here it is that suppose a message, so this is the message that you want to transmit. So as we have discussed in our OSI layer, sir आपकी जो OSI layer होती है उस OSI layer के अंदर आपका डेटा जाता है 0 so anyone please let me know in which layer the data go in the format of bit. किस layer के अंदर bit format में डेटा जाता है in OSI model? You can unmute and you can speak, no problem. Again I will repeat my question. OSI की किस layer के अंदर? Yes. Received it. Yes, it is physical layer. In physical layer, the data go in the form of 0 and 1. So examiner can ask also this question also. So as we have discussed the OSI layer, now we are moving ahead. तो आपका जैसे ये आपका आ गया question. Now, why we add the checksum to make sure that whatever data you have sent, it is the same. There is no alteration happen. तो आपके सामने एक question आ गया. So I will solve the question. Then I will give you the next question. So that question you need to solve. ओके सो यहाँ पे मेरे पास एक मैसेज है, इसको मैं क्या करूंगा n नंबर ऑफ ब्लॉक स्प्लिट्स में करूंगा इक्वली. सो m bit checksum is used, the data is divided into segment of m bits. So मैं यहाँ पे m bits को डेटा को यहाँ पे मैं डिवाइड करूंगा. सो हियर आई विल मेक द पेयर ऑफ 4 4 4 पेयर का मैं करूंगा. देन m bits are added. So option 1 you can say step 1, step 2, in step 3 the result is completed with one's complement, and the step 4 is your obtain checksum. So examiner can give you some options, option A like this, option B like this, option C like this. So you have to take one. Okay, so let's solve. So before moving ahead, so you need to add. आपको आना चाहिए सर 0 + 0 होता है क्या है सर 0 होता है. 0 + 1 क्या होता है सर 1 होता है. 1 + 0 होता है क्या है सर 1 होता है. 1 + 1 क्या होता है आपका 2 होता है. बट इन अवर फिजिकल लेयर हम इसको कैसे बिट फॉर्म में लिखते हैं, वी राइट 2 एज ए 1 0 लाइक दिस वी राइट. सो हे 2 इज माय नंबर एंड 1 इज माय carry bit. What is known, it is known as carry bit. Okay, so let's add this 1 0 0 1. Okay, then we are having 1 1 0 0, then 1 0 1 0, then 0 0 1 1. Let's add this 1 + 1, ये क्या बना सर 2 बना. So 2, how we write this 1 and 0, so 0 and 1 is your carry. Then 1 + 1 + 1, ये कितना बना 3. So how we write 3 like this. So 3 I am writing 3, 1 is my carry. Then 1 + 1, 1 + 1 2, how I write 2 sir 1 and 0, 0 here, 1 is my carry. Then 1 + 1 + 1 + 1, so what is this become 1 2 3 4, 4 it become. How I will write 4 1 0 0, like this I am going to write the 4. Okay, so now you have to remember कि भैया ये फॉर्मेट के अंदर हम डेटा को किस टाइप से लिखते हैं. ठीक है, तो आपको ये 1 0 1 0 आना सीखना पड़ेगा. सो दिस इज द बेसिक नंबर दैट यू नीड टू रीड. Okay, here anyone having any doubt to add the number, or I just made some mistake, anyone want to correct me? You are free to speak here. Okay, तो easy है, यहाँ पे आपको just number को आपने add करना है और कुछ नहीं करना.
ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या बन गया, 4 बन गया, सो 0 0 1, this is I have written. Now what I have decided, that I have decided I will use only 4 bit. How many bit? 4 bit I am going to use only 4 bit. सर आप क्या करें, इस नंबर को 4 बिट में चेंज करते हैं, तो यहाँ तक तो एज इट इज लिख लेंगे। ये जो आगे वाला नंबर है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 1 0 को हम यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे, तो ये क्या बन गया 0 0 1 0, दिस इज माई 4 बिट नंबर। व्हाट इज दिस, दिस इज माई 4 बिट नंबर। Okay, now what step 4 says? Step 4 is that one's complement. One's complement. Now you need to remember what is one's complement. ठीक है, one's complement कैसे निकालते हैं? Like suppose 1 0 1 0 one's complement क्या निकलेगा? इसको रिवर्स करना है, 1 will become 0, 0 will become like 1. So one's complement of 1 0 is 0 1. One's complement of 0 0 is 1 1. One's complement of 1 1 is 0 0. It means one's complement say that 0 will become 1 and 1 will become 0. Okay, this is my one's complement. Now I will do the one's complement of this number. इस नंबर का अपन क्या करेंगे सर, one's complement निकालेंगे। हम क्या करेंगे, इस नंबर का one's complement हम find out करेंगे। So what the one's complement of the number will come? This 0 will become 1, this 0 will become 1, this 1 will become 0, this 1 will become. This is my final checksum. ये क्या बना सर, final checksum. This is my final checksum. So you have to check in the option कि ये वाला option कहाँ लिखा। Let's suppose in D it has written 1011. So you have to take this option. Okay. Now I believe you can understand how we can find the checksum, and this is the checksum is being used when the sender send the data to the destination, so that we can check the exact data is being transmitted, there is no alteration in the data. तो यहाँ पे किसी को कोई डाउट है, anyone having any doubt in this? Physical, yes. Is this clear to everyone who have joined here? If you want me to explain again, I will explain again, but in examination don't make mistake. ठीक है, ये आपको है क्या, ये क्लियर है नहीं है? देन वी विल मूव टू द अनदर क्वेश्चन। क्या ये क्लियर है आपको? लास्ट में हमेशा वंस कॉम्प्लीमेंट होगा, वंस वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, हाँ यस, लास्ट में आपका वंस कॉम्प्लीमेंट रहेगा। देखो इसका सिंपल सा रहता है, मैं यहाँ पे वापस लिख देता हूँ। देखो स्टेप 1 होता है ऐड ऑल इन m bit, जितना भी आपने बिट बनाया, लेट सपोज यू हैव मेक m bit of 4, you make bit of 8. देन नंबर 2 वंस कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना है, एंड द फाइनल विल बी योर चेकसम। ये क्या बनेगा आपका, चेकसम बनेगा। नाउ वी कैन वैलिडेट, whether this is right or wrong. Okay, how we can validate? So let's suppose, and I will take some example of here student, any student, जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जाम देता हूँ आकाश का, ठीक है, आकाश इज हियर। Okay, Akash is here. Akash want to send a message to hi to his friend. Let's suppose anyone who is Akash friend here. So let's suppose Akash friend is Aditya. So Aditya is the Akash friend. Okay, Aditya. Now Akash want to send hi. This hi, it should become hi. ऐसा नहीं है कि hi का ये बन जाए bye बन जाए. This should not happen. So the same message should be done here. If there is some alteration, so I will write this hi in the form of, let's suppose 1001. So this is the data that I'm sending. If the same data is being reached here, so he will accept this data. ये क्या करेगा? अगर data आपका same मिलेगा, so he will accept. If the data is changed, then it will reject. It will drop the packet. क्या करेगा? Packet को drop करेगा. So we have added the 4 number and we have find the checksum. इसका अब क्या निकला सर? What is the checksum we find? 1011. So the same number I am writing here. 1011. This is our checksum. ये क्या निकला था? Checksum निकला था. Checksum. Okay. And what is the number that we have got here? We got here 1001, 1100 and 10110011. This is the number that we want to send initially. So same number I'm going to write just for clarification, verification.
verification at receiver end. So he has had the checksum. Now जो सेम नंबर होगा उसको क्या करेगा, वो लिखेगा 1001 1100 एंड 1010 और लास्ट में एक और नंबर था ना आपका, क्या था, 0011 0011. दिस इज द नंबर. नाउ ऐड ऑल, इन सबको ऐड कर दो. 1 + 1 1 3, ये कितना बना, 3 बना. एक में लिख लिया, एक यहाँ कर दिया. 1 + 1 2 और 3, एक यहाँ कर दिया, वापस एक लिख दिया. 1 + 1 + 1, ये क्या बन गया, 3 बन गया. 3 मैंने यहाँ नहीं, सॉरी, हाँ ये मेरा, ये 3 बन गया. 1 2 3 4. कुछ कुछ गलती की है क्या मैंने? एक सेकंड में वापस लिखता हूँ. 1011, दिस इज माई चेकसम. ए की वैल्यू मेरी यहाँ क्या थी, ए की वैल्यू थी सर 1001. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? वैल्यू ऑफ बी मेरी थी सर 1100. ठीक है. एंड वैल्यू ऑफ सी 1011, वैल्यू ऑफ सी. एंड वैल्यू ऑफ डी, वैल्यू ऑफ डी क्या थी मेरी, ये एग्जाम में नहीं पूछ रहा है, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू हाउ द चेकसम वर्क. ओके, एट द रिसीवर एंड आखिरी में क्या था, 001. ये था क्या, कुछ गलती कर रहा हूँ क्या मैं? ओके, सी मैंने यहाँ पे उल्टा लिख लिया, सॉरी. बी ये था, सी था 1010 और डी था मेरा 0011. ठीक है. नाउ लेट्स ऐड दिस, इनको ऐड करते हैं. देखो 1 + 1 + 1 कितना बन गया, 3 बन गया. 1 लिखा, 1 के लिए मैंने कैरी. 1 + 1 2 एंड 2 + 3 + 4, 4 बन गया. एंड हाउ आई कैन राइट दिस 4, 4 को हम सर ऐसे लिख सकते हैं, राइट. 100, तो 0 मैंने यहाँ पे लिख दिया. इसके बाद यहाँ क्या आ जाएगा मेरा, 10 मेरा यहाँ आ जाएगा कैरी. 1 + 1 मैं यहाँ पे इसको लिख दूंगा, तो 1 + 0 1 आ जाएगा इसका. देन मेरा यहाँ पे 1 आ जाएगा. सेकंड, और उसके बाद में 1 + 1 + 1 4 + 5. 5 को मैं कैसे लिखूंगा, 101. तो इसको फिर मैं ऐड करूंगा यहाँ पे 110 को मैं यहाँ पे ऐड करूंगा 1. ये वाला तो सॉरी एज इट इज रहेगा, ये वाला एज इट इज रहेगा, क्योंकि ये वाला उठ के यहाँ आ जाएगा ना. इसको ऐड कर देंगे 1111. अब इसका हम क्या निकालेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट. वी विल फाइंड वंस कॉम्प्लीमेंट. Okay, one's complement. So the one's complement of 1 1 is 0000. It means checksum match. It checksum match हो गया. So this packet is being accepted by the receiver. जो receiver होगा वो क्या करेगा, इस पैकेट को एक्सेप्ट कर लेगा. Okay, let's see another question so that you can see from 8-bit question. ठीक है. So let's see the question. Let the value of A, B, C, D is provided below. Find the checksum. इसका checksum निकालो. सर ये वैल्यू A है, ये वैल्यू B है, ये वैल्यू C है, ये वैल्यू D है. इसको ऐड करो. आप ऐड करोगे तो ये आपको वैल्यू मिलनी चाहिए. ओके, लेट्स ऐड दिस. इसको ऐड करते हैं सर. 1001100. देखो, इफ यू आर स्टडिंग द कंप्यूटर देन यू हैव टू डील विथ 101010. आपको आना चाहिए. ओके, इफ यू आर स्टडिंग द कंप्यूटर नेटवर्क देन यू हैव टू लर्न 101010. 111 00010. Then 0010 0100. Then we are having 3 4 times 0 0000. Then 100 100. This is the value I am having. ठीक है. To make it easy मैं यहाँ पे imaginary line खींच देता हूँ. To make it easy I will write the imaginary line here. ठीक है. और एक इमेजिनरी लाइन में यहाँ पे खींच देता हूँ सो दैट आई डोंट मेक एनी मिस्टेक. एक इमेजिनरी लाइन में यहाँ खींच देता हूँ सो दैट आई डोंट मेक एनी मिस्टेक. दिस इज द इमेजिनरी लाइन दैट आई हैव क्रिएटेड सो दैट व्हाइल कैलकुलेटिंग आई डोंट मेक एनी मिस्टेक. सो 1 + 000, ये क्या बनेगा, 1. 0 + 1 + 0 + 0, ये क्या बनेगा, 1. 0 + 0 + 1 + 1, 1 + 1 क्या बनेगा, 2. 0 एंड 1 हो गया मेरा कैरी. 1 + 1 2 2. So how I can write 2? 2 I can write 10. So 1 will be the number and 1 will be the carry. 1 + 1 2, 0 and 1. Again 1 carry. 1 + 1 1 + 3. So how I can write 3? 1 1. So 1 number will be here. 1 will be the carry. Then 1 + 1 2, 0 and 1. 1 + 1 + 1 + 1 4. How I can write 4? Sir 1 0 0. So I will write 1 0 0.
This is the number that I am writing. Now here we are having 8-bit number. ये कितना number का sir? 8-bit. So M value is 8. So I will try to make pair of 8-bit only. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. यहाँ तक मैं pair बनाऊंगा. सिर्फ 8-bit. So these 2-bit are extra. इसको क्या है sir? Extra है. So again I will add this number here. So plus 1, 0. These 2-bit are extra. So that's why I have added here. So 1, 1 plus 1, 0. 1 plus 1, 1. क्या कुछ रॉन्ग किया गया मैंने? एक सेकंड, 2-bit रैप था, 1000 10-bit हो गया. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें ना, सही है ना. चेकसम ऐड किया, ये मेरा था चेकसम था 100 100 11. ठीक है, सिंस 2-bit है एक्स्ट्रा, सो ये दो बिट एक्स्ट्रा थी, ये आपके यहाँ पे रैप हो जाएंगी. ठीक है, नो प्रॉब्लम. फिर ये मेरा 1 बन जाएगा 1. देखो 1 plus 1 2 0 और 1 हो गया मेरा कैरी 1, देन 0, देन 1 0, देन 0 0. This is the number which I got. This is the number that which I got. This is the 8-bit number. This is the 8-bit number. Now I need to take ones complement. इसका ones complement निकालेंगे. We need to find the ones complement. So what is the ones complement of this? 0. Ones complement 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1. This is the number that I am going to send. तो ये मेरा नंबर यहाँ क्या आया सर मेरा आखिरी में 110 11 0 10. दिस इज माई चेकसम. ये क्या निकला मेरा चेकसम. ओके, नाउ इट इज क्लियर टू एवरीवन हु इज वाचिंग दिस वीडियो. एनीवन हैविंग एनी डाउट? नाउ आई विल आस्क यू द क्वेश्चन. ओके, सो आकाश को आ गया यहाँ पे समझ में. ओके, सो now we have checked the numerical questions of the checksum, how the examiner going to ask the question related to the checksum and how you can solve the question. Here I am explaining it, that's why it is taking so much of time, but when you are going to solve the question, when you are going to practice in the examination, you don't have to explain, you just need to find the answer and you can easily find the answer. So this is how we are going to find the checksum. So these two numerical questions we have seen.